Hare Krishna. So we are on the 26th verse of the second chapter of Gita, wherein Krishna gives a very different philosophy to Arjuna, that even if you discard whatever I have spoken to you, my dear Arjuna, till now, a Buddhist angle or a Mayavad angle to the understanding of reality versus illusion. The 26th verse, it goes, अथच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृदं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. Krishna says, if however you think that the soul or the symptom of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed Arjuna. So Krishna says, my dear Arjuna, till now whatever has been told is that the soul is eternal and body is always changing and always perishable. Even if you do not believe in the eternality of soul, even if you believe that the soul comes along with matter and goes along with matter, or even if you don't believe there is something called a soul, still there is no problem, because matter will keep on manifesting and unmanifesting. So Krishna, he gives here the Buddhist philosophy, or it is called as Vaibhashika philosophy. Vaibhashika philosophy says that life generates because of certain combination of chemicals. When certain combination of chemicals come to a stage of maturity, at a specific stage of maturity, life manifests. उसके पीछे ये सोल वोल का कोई झंझट नहीं है, सब कुछ केवल शारीरिक स्तर पर ही चलता है. एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट केमिकल्स. केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, सिक्रीशंस होते हैं, लाइफ चलती रहती है, और हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, सब खत्म हो जाता है. सो कृष्णा सेज दैट इवन इफ यू थिंक लाइक दिस, अथच्चैनं नित्य जातम, सो एंड नित्यम मृतम, so nityam mritam and nitya jatam, material world always keeps on manifesting and remanifesting and manifesting and remanifesting. So even if you consider all of your kinsmen that you kill them, they will cease to exist. Still no problem, they will again be born. What is the problem? आज मर जाएंगे तो कल जिएंगे. So here we see that the essence is Vaibhashika philosophy, or even today's material science for that matter of fact. Today's material science is exactly same. Life is a bag of chemicals. So there is a very beautiful real life incident. One professor of anatomy from University of Illinois, US, he conducted an experiment on many dead bodies. So he dissected and found out the chemical composition of many dead bodies, and he found out how much of carbon, magnesium, nitrogen, all of the water, iron, all of these things are there in a dead body. एक मृत शरीर में कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, कितना मैग्नीशियम है, कितना पानी है, इत्यादि सारे केमिकल कंपोजिशंस. And you know how much the value came to, उसका बाजारी आकलन लगाया उन्होंने. So the body of a 60 kg person should cost 110 rupees. 110 रुपए इस शरीर की कीमत. ये शरीर को अगर डाइसेक्ट करके उसको उसके बेस एलिमेंट्स में लाया गया, इस शरीर की कीमत क्या होगी? 110 रुपए. क्या आप अपने बेटे को 110 रुपए में बेच देंगे? क्या आप अपने बेटे या बेटी को 220 रुपए में बेच देंगे 100% प्रॉफिट? क्या आप अपने बेटे बेटी को 2000 रुपए में बेच देंगे? अगर नहीं तो आप बहुत बुरे बिजनेसमैन हैं, आपको प्रॉफिट का अंदाजा ही नहीं है. 110 रुपए का माल 2000 रुपए में बिक रहा है, और क्या चाहिए? सो दिस शोज
that life is not simply a composition of matter. Scientists have always said at one point of time we will make life from matter. Srila Prabhupada has always said that this is like a post dated check. मैं आपको 200 करोड़ का चेक देता हूं. कब का? 2225 का. क्या फायदा है? उस समय आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा. 220 करोड़ का 2225 का चेक, कोई फायदा ही क्या उसका? नहीं. सामने 2 लाख रुपए का चेक रखो आज की डेट का, उसकी वैल्यू है. सो श्रील प्रभुपाद सेज, have they been able to even make one mosquito or an ant in laboratory? इतना ज्यादा उन्होंने वैज्ञानिक तरक्की कर ली. एक चींटी बनाई क्या? एक उड़ता हुआ मच्छर बनाया क्या? मच्छर का पंख बनाया क्या? कुछ भी नहीं बनाया. यस. सो दिस इज लाइक ढोल ताशे पीटना है तो कुछ भी नहीं. सो वैभाषिक फिलोसफी और अथीस्टिक फिलोसफी only says it is all matter, it is going to die, let it perish, नया आ जाएगा. It is exactly like किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे कपड़े हैं, अरे यार जाने दो, धूल मिट्टी जो भी हो नया ले लेंगे. So Krishna says consider this body also to be like this. भीष्म द्रोण they are all old, बहुत धूल मिट्टी खा ली उस शरीर ने, अब मर जाएगा, नया आ जाएगा. प्रॉब्लम क्या है? But this is not the correct understanding. Krishna is just giving an alternative. This Vaibhashika or today's materialistic philosophy does not hold truth. Tomorrow we will have Krishna giving a karma mimamsik definition of life. Do stay with us. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna